Good morning everyone. Hope everybody is fine. In this video we are going to learn about pre-emphasis and de-emphasis. Before moving to the topic, we must know what are the frequency band for an FM signal. Right, the frequency band for an FM signal is 88 to 108 megahertz. The maximum frequency of message signal we are taking is 15 kilohertz. The maximum frequency we are taking is 15 kilohertz. The intermediate frequency in case of FM signal is 10.7 megahertz. The maximum allowable frequency deviation is 75 kilohertz and the bandwidth allowable is 200 kilohertz. Right. Before moving to the pre-emphasis and de-emphasis, we must be aware of these parameters. Right. Moving further, we all know that the power spectral density of a white noise is constant for all frequency ranges ranging from -infinity to +infinity. So I can say that power spectral density remains n0/2 for entire frequency range. This is the power spectral density of noise. This is the power spectral density of noise. Right? Moving further, we know that the power spectral density of a message or a audio signal varies with frequency and it is maximum at 0 frequency and it decreases to the higher frequency range, like I am showing it like this. Right, this is the power spectral density of audio signal or my message signal. Now if I plot these two figures simultaneously, I can make a diagram like this where my power spectral density of signal I am highlighting with this curve. This is the power spectral density of my message signal or audio signal, and we know that the power spectral density of noise is constant for n0/2. So if I suppose this is my frequency, some frequency f1, and I see that the signal to noise ratio in this region is always greater than 1, right? And after this particular frequency f1, my signal to noise ratio decreases, that it becomes less than 1, which is not desirable. So to improve this thing, we use pre-emphasis and de-emphasis circuits. Right, this is the concept. We should know why we are using pre-emphasis circuit in any FM transmitter, right? To improve the signal to noise ratio at higher frequencies. Okay. So what is pre-emphasis? We have written here, at higher frequencies, the effect of noise is more pronounced as compared to low frequencies. Right? We have seen in the circuit on the diagram above. Thus, the signal power becomes very small, but the noise power remains same. Thus, it is desirable to increase the amplitude of high frequency components before it is transmitted. ट्रांसमिशन से पहले हम लोग क्या करते हैं, जो लो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स हैं उनको एम्पलीफाई कर देते हैं या उन पे ज़्यादा गेन दे देते हैं. उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं प्री एम्फेसिस. वन मोर थिंग वी शुड नो अबाउट द प्री एम्फेसिस एंड डी एम्फेसिस is that we have studied the noise in FM receiver where we saw that the power spectral density of noise varies with frequency like this. Right, we have done this in earlier video that my power spectral density of noise in FM receiver is proportional to frequency square. Right, this is my frequency axis. So if my till now we were saying that my power spectral density remains constant.
This was a general concept, but in FM receiver the power spectral density, this was N0 by 2 for white noise, but in FM receiver the power spectral density varies with the square of the frequencies. So if my signal power spectral density is moving like this and my noise density moving like this is noise, this is my, just a minute, this is my power spectral density of noise and this is my power spectral density of signal. So after some frequency f1 the signal to noise ratio becomes more poorer, right? This is why we use pre-emphasis circuit in the FM transmitter. I hope I am clear up to here, right? So what a pre-emphasis circuit does, it provides gain to the frequencies after some particular frequencies. So pre-emphasis circuit is nothing but like a high pass filter, right? Pre-emphasis circuit is nothing but a high pass filter. This is a high pass filter and its transfer function we can write like this. V naught by V in is something S plus 1 by tau plus S plus 1 by alpha tau, right? And my cutoff frequency for this filter is 1 by 2 pi R1C. Here it is the R1. Okay. So if I plot the Bode plot for this high pass filter, the first frequency 1 by tau is approximate 2.12 kilohertz to 30 kilohertz, right? The gain is, the slope of the gain is 20 dBs per decade, right? So what it is doing, that it is providing gain from 2 kilohertz to 30 kilohertz with a rate of 20 dB per decade, right? Suppose the frequency here 3 kilohertz, उसको कुछ गेन मिल रहा है and the frequency here 28 kilohertz, उसको थोड़ा ज़्यादा गेन मिल रहा है, क्योंकि हमने यही बात की थी ना कि जो हमारा पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है वो डिके होता जा रहा है, तो जो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है उसको कम गेन मिलेगा और जो यहाँ पर एम्पलीट्यूड है उसको ज़्यादा गेन मिलेगा, राइट? वही चीज़ हम इसके थ्रू करना चाह रहे हैं, राइट? दिस इज प्री एम्फेसिस सर्किट. सो वेयर इट इज अप्लाइड, where it is applied in the FM transmitter, let's see to the next, right? It is just provide prior to the FM modulation. आपके पास एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आया जिसका स्पेक्ट्रल डेंसिटी कुछ इस तरह का था, उसको आपने प्री एम्फेसिस सर्किट आपने उसको पास किया, एक हाई पास फिल्टर के थ्रू पास किया जो इस तरह का गेन आपको प्रोवाइड कर रहा था, जो हमने अभी बॉडे प्लॉट के थ्रू दिखाया. तो आपके पास क्या होगा, कुछ ऐसा फ्लैटर सा स्पेक्ट्रम, जो स्पेक्ट्रल डेंसिटी है इसका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, वो कुछ ऐसा फ्लैटर बन जाएगा, राइट? और आपके पास अब नॉइस का देखें, अगर हम उसको मैं येलो कलर से दिखाती हूँ, ग्रीन कलर से दिखा देती हूँ, नॉइस का देखें तो कुछ इस तरह का बनेगा. तो अब क्या होगा कि हमारे पास जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो आएगा वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट टाइप्स आएगा, राइट? उसके बाद हम फिर एफएम मॉड्यूलेशन करेंगे और उसके बाद हम इस आउटपुट को एफएम आउटपुट ना बोलकर इसको हम बोलेंगे प्री एम्फेसाइज्ड एफएम आउटपुट, राइट? दिस वाज ऑल अबाउट pre-emphasis. Now what we do in de-emphasis circuit, de-emphasis circuit में हम लोग जो हमने pre-emphasis circuit किया जस्ट उसका अपोजिट करते हैं. मीन्स जो हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट थे उनको ज़्यादा गेन दिया था तो वहाँ गेन कम कर देते हैं. जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल थे जिनको हमने हाई गेन दिया था प्री एम्फेसिस सर्किट में, उनको ज़्यादा गेन दे देते हैं. देखिए तो ये किस तरह का सर्किट होगा, ये एक लो पास टाइप का सर्किट होगा, है ना? दिस इज अ लो पास फिल्टर जिसका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो इस तरह का ट्रांसफर फंक्शन बनेगा. वी नॉट बाई वी इन इज 1 बाई टाउ एस प्लस 1 बाई टाउ, ठीक है? और मेरा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, 1 बाई 2 बाई आर सी, राइट? विच इज अप्रोक्सीमेट 2.2 किलो हर्ट्ज. तो अगर हम इसका बॉडे प्लॉट देखें तो बॉडे प्लॉट कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है? 2 किलो हर्ट्ज तक इट इज प्रोवाइडिंग फ्लैट गेन. 2 किलो हर्ट्ज से लेकर अगर हम कहें 30 किलो हर्ट्ज तक तो इट इज प्रोवाइडिंग -20 dB पर डिकेड, राइट?
तो जहाँ आपकी लोअर फ्रीक्वेंसी को हमने वहाँ लो गेन दिया था तो यहाँ पर उसको हाई गेन मिल गया, जहाँ पे आपने हाई गेन किया था वहाँ पर इसको लो गेन मिल गया। तो आपका जो ओरिजिनल सिग्नल है वो एज इट इज, हमें हमारा सिग्नल जो इस तरह का जिसका स्पेक्ट्रल डेंसिटी था, हमें इस तरह का सिग्नल आउटपुट पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि इसको हम रिसीवर साइड पे यूज कहाँ करते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं, अगर हम बात करें पूरे डायग्राम की, ट्रांसमीटर से रिसीवर तक की बात करें तो हम लोग कैसे करते हैं। पहले आपके पास एक मैसेज सिग्नल आया जिसको आपने प्री एम्फेसिस किया है ना। प्री एम्फेसिस में आपने क्या किया, सिग्नल टू नॉइज रेशियो हाई फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाने की कोशिश की। उसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यूज किया और उसको ट्रांसमिट कर दिया। चैनल के पास आया, चैनल में उसमें कुछ वाइट नॉइज ऐड हुआ। उसके बाद रिसीवर पर आया, डीमॉड्यूलेशन हुआ, लेकिन डीमॉड्यूलेशन के बाद जो आपके पास ओरिजिनल सिग्नल तो रिकवर नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे आपने प्री एम्फेसिस सर्किट यूज किया हुआ था। तो जब हम रिसीवर के पास आए तो हमने डी एम्फेसिस सर्किट आफ्टर रिसीवर यूज कर रहे हैं, विच विल गिव यू आउटपुट y ऑफ t which will contain your message signal with some noise, right? I hope I am clear. If you have any doubt, please drop into the comment box. I will revert to you. I hope you will like this video. If you like, please like my channel and subscribe it. Thank you so much for watching.